Determinacy of trusses. This is the topic that we are going to start fresh today. What is the meaning of determining something? Can somebody who is confident and who knows the actual meaning, the English meaning of the word determining something? Determining. Do you know the meaning? Somebody please tell me. Determine. What is the meaning of this word? Anybody? Sir, finding the value. Yes, as simple as that. Determining means finding. As simple as that. Start and end there. What is the meaning of determinacy? Can anybody guess? I'm sure that this is not a very common word, and most probably this is a word coined for technical reasons only. And in English language, very few people might be using the actual term determinacy. But just try to guess what could be the meaning of determinacy. क्या मतलब हो सकता है इसका? गेस करने की कोशिश करो कोई. Determinacy. The Determinacy process, means, the yes, process, yes. बताओ. the process maybe. Protect. The Process. process. नहीं, मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्या बोल रहे हो आप. The process of Process. finding the value. Cross finding. The process of finding the value. No, not process. Process of finding the value is determining only. Because if you say simply that determining something in a truss, that means there has to be a process by which you will determine something, whatever that something is. Determinacy is the capability of getting determined. कि भाई पता कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो. This is the meaning of determinacy. So determinacy eventually boils down to two things: whether the truss is indeterminate or whether the truss is determinate. Look at these two statements that I'm underlining on the screen here: statically determinate and statically indeterminate. Determinate means पता कर सकते हैं. Indeterminate means पता नहीं कर सकते. तो अब सबसे पहली बात तो ये उठती है कि क्या पता करना है आपको. What do you want to determine? So determinacy, I hope you have understood the word literally means the capability of determining, कि पता कर भी सकते हो कुछ चीज या नहीं कर सकते हो. So if you can determine, then you call it determinate, and if you cannot determine, then you call it as indeterminate. अब सबसे पहला सवाल यहीं पे आके आपके सामने खड़ा होता है कि भाई क्या डिटरमाइन करना है आपको. What is it that you want to find in a truss? What you want to find in a truss is the forces in the members. For example, let us say this is a truss, and let us for a moment forget that this is a deficient truss. Let us just assume that there is a diagonal also. If you just put a diagonal here, then this truss becomes stable, and now you can apply the loads. So if I apply the loads, this truss is bearing these loads. That means it is now carrying the loads and it is not getting distorted. Now, once the loads are being carried by the truss, the engineers are now interested in understanding what is the individual experience of these members. Bhai, tum logo ko kya feel ho raha hai? What are you feeling? So each of these members, once the complete truss is loaded externally, will be either feeling tension or compression. This was also explained by me in the previous class. एक ट्रस को ट्रस कह करके उसको फ्रेम ना कह के एक ट्रस कहते हैं. इसका मतलब ही ये होता है कि उसके इंडिविजुअल मेंबर्स में या तो प्योर टेंसाइल फोर्स होगी या प्योर कंप्रेसिव फोर्स होगी. एंड इफ यू वांट टू विजुअलाइज दीज फोर्सेस, दिस इज शोन इन द फिगर हियर. This is a simple truss, and an external load in the form of a horizontal force P is applied here. Okay. Now, once it is applied, since all these joints are pin joints, there will be no bending in any of the members, and each member will experience pure tension or compression.
and that is what is being shown in the right side image. This vertical member AB is experiencing tension. Look at the forces. This is the experience of the individual member AB. It is experiencing a tensile pull FAB in the upward and downward direction. Similarly, if you ask what is the experience of the rod AC, then this is the experience of rod AC. Rod AC is experiencing a compression. Look at the force direction. Compression means external forces are trying to compress this rod. What is the experience of rod BC? The BC rod is experiencing tension. So this is what you want to determine in a truss. So you make a truss, an engineer makes a truss for some purpose, for a bridge or for some arch or something like that. He installs in its place, and now the engineer is interested in knowing whether the individual members are happy. Happy means whether they are capable of bearing the load or not. Now that becomes the next stage of design. But as students of engineering mechanics, your scope is limited to determining the individual forces of these members. So if I load with say 10 Newton and 15 Newton at the top here, the next thing that I want to determine is what are the forces being experienced by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 members. And after determining how many newtons of tensile or compressive forces these are experiencing individually, I also want to determine their nature. By nature, I mean, if I say that member 1 is experiencing 5 newtons of force, I also want to determine that 5 newton is tensile or compressive. So once I determine the individual values of forces being experienced by each members and their nature of being tensile or compressive, I say I have determined everything in the truss. This is what is the meaning of determinacy of trusses. Now, there is another thing that stands in your way of determining these forces. There is a reaction developed at the supports also. This is a roller support, so it will only generate vertical reaction. This is a simple hinge support or simple pin joint, so it will generate two reaction components, reaction in the vertical direction and reaction in the horizontal direction. Now, as mathematics of statics governs, until and unless you find the values of these reactions also, you will not be able to determine all the forces in the members. We will see it in a numerical example later on. So eventually what I'm saying is, in a given truss, what are the things that you want to determine? The first thing that you want to determine is individual forces in the members and their nature, whether they are tensile or compressive. And also, because they cannot be determined until and unless you find the values of reactions at the supports. So eventually, your goal of achieving the determinacy of a truss involves, whether you want it or not, involves the finding of the reaction components also. So overall, you have to find all the reactions. You have to find all the forces in the members once the truss is loaded. Now this is what is called as determinacy of trusses. अब कुल मिलाकर के बात यहाँ आ जाती है कि एक ट्रस पे लोड लगा दिया, उसके सारे रिएक्शंस को डिटरमाइन करो, उसके हर एक मेंबर के अंदर की फोर्सेस को डिटरमाइन करो, और इसको डिटरमाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उसको डिटरमिनेसी कहते हैं. Did you understand this concept? What is the meaning of determinacy? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिटरमाइन करना क्या है हमें ट्रस में. What you have to determine is the individual forces in members and the reaction components. और ये सारी चीजें आप पता कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उस चीज को डिटरमिनेसी कहते हैं. Now there is again a mathematical relationship that gives you the direct answer to this question. What does this relationship say? This relationship says count the number of joints in your truss. So let us come to this truss. Now we are discussing this truss. How many joints are there? Somebody please put on the microphone on and tell me how many joints are there. J ki value. Three. Very clear and very easy. The number of joints is 3. 1, 2, 3. 3 joints are there. Okay. And now again this equation says count the number of members in this.
How many members are there in this Three. trust? 3. Again, 3. the Three. value of Three. number of members is equal to 3. First member, second member, and third member. There, there are 3 members. And now, the third thing that is required is how many reaction components are there in your truss. So in order to find the number of reaction components, first of all, you have to see how many supports are there. There are 2 supports, the first support and the second support. And now try to see what are the reaction components that are possible for both the supports. The first support B is a simple pin joint. And can anybody tell me how many reaction components will be there on point B? There will be 2 because it is a simple pin joint. So whether the direction of force is pure vertical or pure horizontal, until and unless you know 100%, you blindly put 2 reactions here. So there is a vertical reaction at B and there is a horizontal reaction at B. You even don't know the directions, okay? So you can put any arbitrary direction, whichever direction you please. आप ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने अभी इसको उल्टा क्यों लगा दिया? आप कैसे भी लगा सकते हो. Once you solve the mathematics and find all the reactions and all the forces, your forces and reactions will auto correct themselves if your mathematics is correct. Now this is a very interesting thing and we will come to that later on. Okay. Anyway, what is the type of reaction and how many reaction components will the support 2? 2. इसमें कितने reaction components आएंगे? 1. There will be only one reaction component because of the rollers. और ये अपन ने काफी टाइम स्पेंड करके क्लास में पिछली बार पढ़ा था कि if there are roller supports, the roller supports are incapable of developing horizontal reactions. रोलर सपोर्ट्स में कभी भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता. तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा जो कि वर्टिकल है. So how many reaction components are there in this complete truss? 3. There are 3 reaction components. 1, 2, and 3 reaction components. So R is 3 in your truss. And now apply this equation. 2j m plus R. What is the value of 2j? Find it from here. 6. 2j is 6. Is it equal to m plus R? Yes, sir. So if this equation is satisfied, which is true in this case, then you say that this truss is determinate. अच्छा अभी बताओ इसमें total unknowns कितनी है? Just look at the truss, forget about everything, and just if you have understood whatever I have said till now, just tell me how many unknown forces are there in the complete truss. Obviously, as you can see, the force in member AB, this one, the force in member AC, this one, the force in member BC, this one. So these 3 are definitely the unknowns that you want to determine. ये पता करना चाहते हो. And these 3 cannot be determined until and unless you already know the values of these reaction components. So in order to find these desired values of forces, you must have the values of these reaction components also. तो ये भी एक जरूरत के अंदर इंक्लूड हो जाता है कि भाई रिएक्शन तो पता करना ही पड़ेगा, चाहे हमें पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो. So how many unknowns are there? 1 force unknown, second force unknown, third force unknown, and 3 reactions unknown. So total unknowns are 6 in number, and that is what the right hand side of the equation represents. ये m plus r indirectly आपको यही बताता है कि कितने unknown values हैं आपकी प्रॉब्लम में. So if you want to find out, कोई भी randomly एक ट्रस्ट बना के दे दें और आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस ट्रस्ट में कितनी अननोन चीजें डिटरमाइन करनी है आपको, you simply calculate m plus r. That will be the answer to the number of unknowns. And what is 2j? 2j जरिया है इन unknowns को पता करने का. How? Because for each joint that you see in the figure, you can apply
summation of horizontal forces equal to 0, one equation, and summation of vertical forces equal to 0, second equation. In other words, what I'm trying to say is, for every joint that you see in the figure, you can apply one equation and two equation. So for every joint, there are two equations. And for the complete truss problems, there are m plus r unknown values. And in order to find m plus r unknown values, your m plus r unknown values must have m plus r equations also. Only then would you be able to determine m plus r unknown values. ये चीज अगर आपको क्लियर करनी है, I will spend some more time here and explain it to you with the help of a simple example. ये जो अभी मैंने समझाया, ठीक है? Let us say we have an unknown value a, and there is another unknown value b. For some random problem, अभी ट्रस बस को छोड़ दो. Just imagine that there is a mathematical problem that you are discussing, and you are required to find the value of two unknown values, some values a and b. And it is given to you that a plus b equal to 2. Can you find the actual true values of a and b with the help of one single equation? Tell me. Sir. कर सकते हो? No, sir. कभी No, नहीं sir. कर सकते. You can never find the actual values of a plus b because there are infinite number of possibilities. A could be 1, b could be 1, or a could be 0 and b could be 2, or a could be 2, b could be 0. तो आप बोलोगे इनफाइनाइट तो नहीं हुई, ये तो तीन पॉसिबिलिटीज में गेम ओवर. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट अगेन. a could be 0.5, b could be 1.5. now can you see the possibilities exploding literally to infinite? A could be 0.0123 and b could be 2 minus this thing. So can you see that the possibilities of a and b values runs literally to infinity if a and b are real numbers? तो दो unknown हो और एक ही इक्वेशन हो तो वो कभी नहीं पता लगेगी आपको. You will never be able to determine the values of two unknown values with the help of one equation. Now the statement which we're discussing earlier, if there are two equations, let us say a plus b is 2, but a minus b is 1. Now there are two equations, equation number 1 and equation number 2. So how many unknowns are there? Two unknowns are there. How many equations are there? Two equations are there. Now this problem becomes determinate. अब ये पता की जा सकती है. अब इसको कैसे पता करोगे? इसमें से एग्जैक्ट वैल्यू बताओ a और b की कैसी है. दो इक्वेशन दे दी आपको. You add these two equations. अब इसमें गणित आप कुछ भी लगा सकते हो. दो इक्वेशन दे दी ना, अब इन इक्वेशंस के साथ कुछ भी जगलिंग करो आप. You can do any sort of juggling. If I add these two, what I get is twice of a is equal to 3. So what is the value of a? It is 1.5. So once you get the value of a as 1.5, b would be automatically equal to 0.5. So now you get the exact values of a and b. Did you understand this small analogy? ये छोटी सी प्रॉब्लम समझ में आई क्या आपको? Anybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? What is the eventuality of this situation? If you have n number of unknown values and mathematically you want to find all the n values, then you must have at least n equations. Otherwise you won't be able to solve it. You will never be able to find all the unknown values. तो बस ये simple सा logic है इस equation के पीछे. Now you know what is the logic behind this equation. Let us once again recapitulate the equation. M plus R is the number of unknown values. 2j is the number of equations. So as we just understood with the example of A and B, if the number of unknowns is exactly equal to the number of known equations, then the problem is determinate. That means you can find all the unknown values of the problem.
That is why this equation has been constituted like this. Because each joint J represents two equations. Summation of x forces equal to 0, this is one equation, and summation of y forces equal to 0, this is the second equation for each joint. So if every joint has these two equations, how many total equations does this whole truss have? Twice of number of joints. So that is the eventuality of 2j here. So 2j is the number of equations, m plus r is the number of unknowns. And if the number of unknowns is exactly equal to number of equations, then the problem is determinate. So this is the concept of statically determinate and statically indeterminate problem. Okay? Now you read up these three sentences and you can eventually get a good understanding of what this thing means. This small explanation and this small topic can be asked separately in your exams and not as a part of some numerical. You might be required to explain the concept of static indeterminate and static determinate trusses. So you have to expound this particular part in your own words. इतना सा जो part यहाँ पर मैंने आपको समझाया, plus ये जो यहाँ पर theory दे रखी है, if you remember it and remember how to put it in your own words, this should be sufficient for your examination. Now, basic assumptions of truss analysis. You have to remember this. This is specifically mentioned in your syllabus. तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है. What are the assumptions taken in truss analysis? You remember these. Members are connected at their ends by smooth frictionless pins. So these pins are smooth and frictionless to allow rotation to accommodate the shifting of the members individually, so that there is no bending inside the members. There is only pure tensile or compressive forces. Second one, loads and reactions are applied to the truss at joints only. सिर्फ joints पे ही forces allowed हैं. ये देखो, joint पे force, joint पे force. Look at another one. See, this is a truss that we will be discussing right now. Look at this one. One force is applied, that is also at the joint. So this is another assumption of truss analysis, that external loads and reactions are supposed to be applied at the joints only. लेकिन रियल लाइफ में आपको कोई अंकुश लगा सकता है क्या इस बात पे? जैसे कि कोई ब्रिज है, आपसे ये कोई कहे कि भाई इस ब्रिज में जहां जहां जॉइंट दिख रहे हैं सिर्फ वहीं पैर रखना. Is it possible? It's impossible and kind of a joke. So this assumption is made to make your calculations easy. Otherwise in real life the loads are applied everywhere. एक ट्रस दोगे तो उसके बीच में भी लोड लग जाएगा, यहाँ पे भी कुछ लटका देंगे लोग. So trusses are loaded at all points and nobody can force you to apply loads only at the joints. But the thing is, if you apply loads at other locations other than the joints, then it does not remain a truss, then it becomes a frame. Why does it become a frame then? Because as soon as you apply loads at intermediary positions apart from the joints that are provided, then the members start experiencing, members means जो rods हैं, the individual rods of the truss start experiencing bending. It will bend like this, and as soon as bending comes in, it becomes a frame. तो फ्रेम और ट्रस के बीच में डिफरेंस ही मेन यही था कि अगर इंडिविजुअल मेंबर्स में बेंडिंग आ रही है तब तो उसको फ्रेम कहोगे, और अगर इंडिविजुअल मेंबर्स में सिर्फ कंप्रेशन और टेंशन है तब उसको ट्रस कहोगे. This was the basic underlying assumption or the basic difference between truss and a frame. So since we are doing truss analysis, तो ये जरूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रस ही रहे, फ्रेम नहीं बन जाए. तो इसीलिए ये एक assumption कंपलसरी कर दिया आपके लिए, that loads and reactions must be applied at joints only. This is the reason for this assumption. Okay, what is the third one? The centroidal axis of each member is straight. See, is straight. That means if the centroidal axis, ये इसका centroidal axis है, इसके center से जो imaginary line जा रही है, ये line अगर straight है तो इसका साफ साफ मतलब है कि there is either pure compression or pure tension.
अगर ये सेंट्रॉइडल लाइन ही बेंड हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके मेंबर में बेंडिंग आ गई. So this is again the restatement of the same assumptions that we are discussing, but you have to remember it as it is, and coincides with the line connecting the joint centers at the end of member. Each centroidal line will connect the joints. Okay, that is understood. All members function as two force members. What is the meaning of two force members? Please don't misjudge it. Don't ever remember that a two force member means a member carrying two forces. No. A two force member means a member which is capable of carrying either of the two types of forces, tensile और compressive. ये है two force member का मतलब. तो वापस से मैं हिंदी में आपके लिए रिपीट करता हूं. टू फोर्स मेंबर का मतलब ये नहीं है कि उस मेंबर पे दो फोर्सेस हैं. एब्सोल्युटली रॉन्ग. टू फोर्स मेंबर का मतलब है कि कोई भी मेंबर आप ट्रस्ट में से उठा लो, वो दो टाइप ऑफ फोर्सेस में से कोई सी भी एक ही कैरी कर सकती है. यानी कि उस मेंबर के पास में टाइप ऑफ फोर्सेस की दो ही ऑप्शन है, इसीलिए टू फोर्स मेंबर कहा जाता है उसको. नॉट बिकॉज इट इज कैरिंग टू फोर्सेस. तो ये assumption क्या कह रहा है? ये assumption बेसिकली इसको आप रीराइट भी ऐसे कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज अ टू फोर्स मेंबर assumption, you can simply say that the individual members are subjected only either to tension or compression and never subjected to bending. ये assumption ऐसे भी लिख सकते हो आप. So you have to remember these four assumptions as the basic assumptions of truss analysis. ठीक है? तो बेसिकली आपकी जो ये टॉपिक्स थी, determinacy of trusses and basic assumptions of truss analysis is over, and now I would like to ask you one question in general. Look at the truss now shown in the figure. This is the first support, this is the second support. Now just apply the formula 2j equal to m plus r, and just tell me whether this is a statically determinate truss or a statically indeterminate truss. What is the number of joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the left hand side? 12. Now count the number of members. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let us say there are 8 members. And now the number of reaction components. For reaction components, you have to look at how many supports are there. In this truss, how many supports are there? So, There are 2 supports. See, this is not a support, this is hanging in the air, and only a 2 kilonewton force is applied at this joint. There is no support here. How many supports are there? There is no support here. There is no support here. There are only 2 supports at F and at E. And once you have identified the support centers, you look at the type of support it is. What type of support is this? Is there a roller here or here? no. There are no rollers. These are purely pin joints. So how many reaction components will be developed at each support? There will be a vertical component and a horizontal component. Vertical component and a horizontal component at both the supports. So how many reaction components are developed at 2 supports? Four. How many? 4. 4. 1, 2, 3, 4. So R is 4. So now give your judgment. Is this truss statically determinate or indeterminate? The determinate. It is statically determinate. And what is the meaning of statically determinate means? How many unknown forces are there in this? How many unknown forces are there? 12. There are 12 unknown forces. The
forces in all individual members is an unknown quantity. The forces in reaction components are unknown quantities. और जैसा कि मैंने बताया, रिएक्शन को जबरदस्ती क्यों ले रहे हैं? क्यों? रिएक्शन को फाइंड किए बिना ये सारी चीजें आप एक साथ फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अननोन क्वांटिटीज में रिएक्शंस को हमेशा इंक्लूड कर लिया जाता है. So there are 12 unknown quantities and there are 12 number of equations. So if a truss like this is given to you in a problem, which is eventually given in a problem in your note sheet, you will be easily able to solve this truss. Solve a truss means finding all the unknown values. You have to find forces in all members and the reaction components. This is the meaning of this. Okay? Is this much part understood to you? Is it clear? Yes, sir. Now we can move on to the next part, method of joints for truss analysis. In your syllabus there are two joints for truss analysis. Truss analysis का मतलब क्या है? You have to find all the unknown forces in a truss. That's all. That is already understood by us. Now what does method of joints mean? Let us quickly, without wasting time, go to the method of joints. I have already given you a detailed description. Notes are there, and I have given my personal opinion in the form of individual my personalized notes, so that you can remember, apart from whatever is given in your textbooks, you can remember something extra so that your calculations become easy. And now let us directly come to the problem. Method of joints. तो अपन क्या करने जा रहे हैं? Problem 1 says determine the forces in the bars due to the vertical load 2 kilonewton applied at A in figure 3. ये वही ट्रस है जो अभी तक अपन देख रहे थे. Now this is a problem for you. It is having a support here and another support here. Both of the supports are pin joints. None of them is roller. And this complete truss is basically hanging from a wall. If you can see that this is a fixed support, this is a fixed support, you can see that it is literally hanging from a vertical wall. And at this joint, you have applied a downward force of 2 kilonewton. And with this much information, okay, apart from that, some geometrical information is also given, that all the angles are 60 degrees. That is also given. This is given, this is 2 meters, this is 2 meters, and since all the triangles are equilateral, this is also 2 meters, this is also 2 meters. But we'll see whether which equations and which information is required by us. But eventually the question that is asked of you is find all the forces in the bars. इसमें reaction पूछ रहे हैं क्या आपसे? Reaction पूछा जा रहा है क्या आपसे? Look at the problem and tell me. नहीं मांग रहे. And this is another common mistake that students make, कि एक प्रोसीजर को रट लेते हैं, किताबों में देख लेते हैं, and they simply go on doing it, and eventually they end up wasting a lot of time in examination. You should read the question very carefully and tune your applied mechanism in such a way so that you expend only that much time in finding the required values only. ये सिर्फ आपसे बार्स के अंदर की फोर्सेस पूछ रहा है, यहाँ की 4 रिएक्शंस नहीं मांग रहा, तो ये आपको नहीं पता करनी. You don't have to find the reactions, but you have to find how many unknown values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. अच्छा, but before we proceed, I want to ask you one thing. इसके बाद आपके कोई लेक्चर है क्या? अभी फिलहाल 12 बजे बाद. सर 2 बजे से है सर. 2 बजे से है ना? So Yes, what sir. I'm going to do is, since I have spent a little extra time in explaining the real life concepts of whatever you are studying right now, मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा expound कर गया ताकि आप लोगों को एक feel आए, एक engineering की feel आए. Otherwise इसको मैं जल्दी जल्दी भी निपटा सकता था,
क्विकली कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स कि भाई ये फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला इसका है, इसको रट लो, अगर ऐसा आ गया तो डिटर्मिनेट, ऐसा आ गया तो इंडिटर्मिनेट, बट यू वुड नेवर हैव अंडरस्टूड द रियल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट कि इसको डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट के लिए ये इक्वेशंस क्यों यूज करते हैं. So in order to explain a lot of stuff, I have to expend a little extra time also. But I want to finish this one particular problem with you guys, or at least leave you at a point at which you can conveniently cover the problem on your own. So इसीलिए I would be taking some 10 to 15 minutes extra of your time. So if that is not an inconvenience to you guys, you stay tuned with me for some 10 to 15 or even up to 20 minutes. It could take a little extra time also. So you spend some extra time, but you will learn a lot of things in the class. And there is a request that even if you are not interested in listening to me, please keep your phones or tablets or computers switched on and linked to the lecture, because I will be taking the attendance only at the end of the lecture. तो आप लोगों अगर इंटरेस्ट आपका खो जाता है कि भाई आज बहुत पक गए, अब हमें नहीं पढ़ना, तो आप अपना कनेक्शन ना बंद करें, क्योंकि कनेक्शन बंद कर दोगे तो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी. ठीक है? Can we do that? You have to stay a little bit extra for today's lecture, but attendance will be collected only at the end of the lecture. Let me just refresh your attendance. Okay. Please don't leave the classroom in between, okay? If you are interested, you can just place your phone at some side. Don't listen to the lecture, but it is highly desirable that you listen and understand, क्योंकि ये problems आएगी और आपको अपने intuition से इसको करना आना चाहिए, solve करना आना चाहिए. Now I will very clearly, very slowly try to make you understand how to solve for the unknown forces of a truss by using the method of joints. This is what you are going to learn. Okay? Now let us continue. अपने को सारी फोर्सेस पता करनी है. कितनी कितनी फोर्सेस पता करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 forces have to be determined. Okay. Now what method of joints tells you is, see, the steps for analysis by method of joint, ये सब यहाँ पर मैंने verbally यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अब इतनी ज्यादा अपन उसमें पढ़ा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे. We will simply try to understand what has to be done. You go to one joint at a time, and at each joint apply this equation. The summation of all horizontal forces is 0, and the summation of all vertical forces is 0. You apply these two equations by going to each joint individually, and that is the start and end of the procedure. बात यहीं चालू होती है और यहीं खत्म हो जाती है. आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान थी बात, मगर इसमें आपको अपना लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा. अब इसमें नियम क्या है? नियम यह है कि आप पहले वो जॉइंट ही लें जिसमें कम से कम एक फोर्स तो नोन हो और ज्यादा से ज्यादा दो अननोन हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. आई हैव पुट इट इन वर्ड्स आल्सो. In all cases, the joint analysis should start at a joint having at least one known force, यानी कम से कम एक फोर्स तो पता होनी चाहिए जॉइंट पे, and at most two unknown forces, यानी कि उसी जॉइंट पे जिस पे कम से कम एक फोर्स पता है, उस जॉइंट पे दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस भी नहीं होनी चाहिए. ये नियम है आपका जॉइंट सिलेक्शन का. ठीक है? So once again, we have to find the forces in each bar. We are using the method of joints, and in method of joints all you have to do is go to each joint individually. पहले joint A का एनालाइज करो, फिर joint B का एनालाइज करो, फिर C का करो, फिर D का करो, फिर E का करो, फिर F का करो. आप ये पाओगे कि आपको सारे जॉइंट्स पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपके फोर्सेस पता हो जाएंगे. लेकिन कौन से जॉइंट पे आपको सिलेक्शन करना है? भाई अभी मैं आपसे मेथड ऑफ जॉइंट लगाने को कहूँ तो मर्जी से कोई भी कहीं से भी चालू कर लेगा. कोई बोलेगा कि यार मेरे को डी पॉइंट अच्छा लग रहा है, लेट मी गो टू पॉइंट डी एंड स्टार्ट द एनालिसिस. बट टेल मी,
हाउ मेनी नॉन फोर्सेस कैन यू सी ऑन पॉइंट डी? कितनी नॉन फोर्सेस दिख रही है आपको पॉइंट डी पे? 0. जीरो। 0. कोई भी फोर्स नॉन नहीं है, तो पॉइंट डी से एनालिसिस स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, लेट अस गो टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पे कोई नॉन फोर्स दिख रही है क्या? नो सर। नो। No, sir. So you cannot start the analysis at point B, and by this process of elimination you will see that currently there is only one joint at which the analysis of method of joints can start, and that is point A. यस ये समझ सर। में आ गया आपको? तो कम से कम एक नॉन फोर्स तो होनी चाहिए जो कि सिर्फ पॉइंट ए पे दिख रही है, बट देयर इज अनदर कंडीशन आल्सो। द नंबर ऑफ अननोन्स एट दैट जॉइंट दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस मस्ट नॉट कंटेन मोर देन टू अननोन फोर्सेस। अब ये बताओ कि जॉइंट ए पे कितनी अननोन फोर्सेस हैं? देयर इज वन अननोन फोर्स, लेट अस कॉल दिस एज फोर्स ए बी, एफ ए बी। There is another unknown force which is force AC. Now some of you might argue कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये फोर्स उधर को ही है, क्या ये इधर को नहीं हो सकती थी क्या? बिल्कुल हो सकती थी। And the answer to this question is, whenever you select the direction of unknown forces, you select any direction of your convenience. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप प्रॉब्लम में यहीं फंस जाओगे, यार मैं डायरेक्शन कौन सा लूं? यू टेक एनी डायरेक्शन। सो विच डायरेक्शन आर वी ट्राइंग टू चूज? I have randomly selected FAB to act away like this. I have randomly selected FAC to act in this direction. Now whether the directions I have chosen are actually correct or not, they will be revealed to us after we solve the problem. Okay. तो अभी क्या किया अपन ने? जॉइंट ए सेलेक्ट किया, क्योंकि जॉइंट ए पे अननोन फोर्सेस कितनी है? एक, दो। तो दो से ज्यादा तो नहीं है ना, दो है। नॉन फोर्सेस कितनी है? एक है। कम से कम एक नॉन फोर्स तो चाहिए थी। नाउ दिस इज वेयर वी स्टार्ट द एनालिसिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। नाउ लुक एट दिस फिगर। अब जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। Let me get a little bit more space for you here. Okay. Now this is the free body diagram of joint A. I put a point. This is A. There is a force. We will call it as FAB. There is another force unknown which is horizontal. This is FAC. And there is a downward force which is 2 kilonewton. This is 60 degrees. What is this angle? 90. And whenever you take a joint and draw the free body diagram, you put an imaginary axis over it. So this is the x-axis, this is the y-axis. There are two unknown forces, there is one known force. Now at this point at joint A, what you have to do is apply this equation first. Summation of all horizontal forces is equal to 0. Can you make up this equation? If you cannot make up, I will make it up for you, because this is the first time that I am explaining this concept. Okay? Free body diagram of joint A का मतलब क्या है? This is what you have to understand first. It should indicate the forces acting on point A. So FAB, which I have drawn in this figure, is actually not the force being experienced by rod AB. This is actually the force that rod AB is pulling the joint A with. तो जॉइंट ए का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है इस फिगर में। फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन आप लोग देखें, इट गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी विच इज ड्रॉन। तो आपका अभी बॉडी ड्रॉन कौन सा है? पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का एक्सपीरियंस है ये आपके ए बी और ए सी का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है? एनीवे,
This is the free body diagram of point A, and I have randomly chosen the directions of FAB and FAC to act like this. If you want, you can reverse these directions at your will. ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया. तो आप कौन सा डायरेक्शन अज्यूम करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाद में अपन को रिवील हो जाएगा कि आपका डायरेक्शन सही था या गलत था. अपने आप ही ऑटो करेक्ट हो जाएगा. Now, horizontal components of all forces is supposed to be 0. Now, will the 2 kilonewton force will have any horizontal component? इस force का कोई horizontal component है क्या? Anybody? No, sir. इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है. ये फोर्स प्योरली हॉरिजॉन्टल है. ये FAC प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? प्लस AC. Plus FAC because it is acting in the right side direction, which is taken as positive. Okay. And now there is FAB, which is at an angle of 60 degree. What will be the horizontal component of FAB? FAB cos 60 degree. Very good. So I will put plus FAB. ये plus क्यों लिया मैंने? in X direction. क्योंकि इसका जो कंपोनेंट आएगा x में, ये इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में आएगा. That is why plus FAB cos 60 डिग्री. अब इक्वल टू किसके बराबर रखूं इसको? What is this equal to? 0. This is equal to 0. This is the first equation, or the equation which is denoted by summation f horizontal equal to 0. क्या इस एक इक्वेशन से आपको FAC और FAB पता लग रहे हैं क्या, या लग सकते हैं क्या? No, sir. नहीं पता लग सकते. जो अपन ने लॉजिक आज सीखा था, by extending that logic to get two unknown values, you must have at least two equations. So the next equation will be obtained from summation vertical forces equal to 0. अब ये सेम लॉजिक वर्टिकल फोर्सेस के लिए लगाओ. तीन फोर्सेस आपके फिगर में है, तो तीनों फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट आने चाहिए. पहले तो इसको ले लो, ये तो प्योर वर्टिकल है. इसको +2 लिखूं या -2 लिखूं? Plus. गलत. -2 sir. This will be -2 because it is in the downward direction. Yes, sir. Sign conventions Okay, have sir. to be followed exactly. ठीक है. Sign conventions क्या कहती हैं कि downward forces are negative, right forces are positive, left forces are negative, upward forces are positive. तो up और right की forces तो positive, left और down की forces negative. ये sign convention आपको follow करना पड़ेगा. ठीक है. So summation of vertical components. This is purely vertical, so I will put it as -2 because it is in the downward direction. FAC का कोई vertical component है क्या? No, sir. There is no vertical component, so omit this. FAB का vertical component कितना है, वो प्लस है या माइनस है, ये बता दो मुझे. Sir, plus है sir. Plus है sir. Very good. What is the value of that vertical component of FAB? FAB sin 60 degree. Absolutely right. That will be FAB Sin 60. sin 60 degrees. Equal to किसके बराबर रखूं? 0. This is the equation, equal to 0. Yes sir. Now you have got two equations, and I want you to quickly solve the values of FAC and FAB by using these two equations. मेरे को जल्दी से FAB FAC की values पता करके बताइए आप. Use your calculators, quickly do it. पहले इक्वेशन 2 यूज करो, उससे FAB डायरेक्टली आ जाएगा आपका. See how you have to do it. Using equation number 2, rearranging it, -2 को उधर ले जाओ, so this will become FAB sin 60 equal to 2. And now FAB can be simply found out by 2 divided by sin 60. As simple as that. ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है आपको.
ये मिल गया आपको. What is 2 divided by sin 60? Give me the answer. 4 by root 3. 4 by root 3. Yes, sir. kilonewton. And since the value of FAB is positive, this indicates that the direction of FAB that you assumed, ये पता नहीं था पहले अपन को FAB इस डायरेक्शन में, आपने बस ऐसे ही तुक्के से लगा दिया था, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के बाद FAB की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, तो इसका मतलब है कि आपकी जो FAB की assumed डायरेक्शन थी वो सही थी. This is how you eventually know whether your directions were correct or not. अब अपन ये भी देखते हैं कि FAC की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो करेक्ट थी या सही थी या गलत थी. एनीवे, नाउ 4 by root 3 किलो न्यूटन FAB, एक बार अपन चेक करते हैं सही आंसर है क्या. 4 by root 3 किलो न्यूटन. अब इसमें इन्होंने टेंशन भी लिखी है. अब ये कैसे पता लग रहा है कि ये टेंशन है कि कंप्रेशन है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी तो पता करना है ना भाई. FAB की डायरेक्शन तो ये होगी. ओके, ठीक है. अब इसमें ये समझना जरूरी है कि FAB जो है, ये फोर्स आपने अभी जो निकाली है, ये फोर्स ये AB मेंबर A जॉइंट पर लगा रहा है, ना कि A जॉइंट AB पर लगा रहा है. लेकिन आपको निकालनी है FAB एज एन एक्सपीरियंस ऑफ रॉड AB, यानी कि FAB की वैल्यू तो 4 by root 3 है, लेकिन इस रॉड को क्या फील हो रहा है? 4 by root 3 टेंशन फील हो रही है या 4 by root 3 कंप्रेशन फील हो रही है? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम में जो फिगर है उसका उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि FAB का करेक्ट डायरेक्शन तो ये है, लेकिन वो जॉइंट A पर है, तो FAB का डायरेक्शन रॉड AB के लिए कैसा होगा? ऐसा होगा. अब ये बताओ, अगर रॉड से बाहर जाती हुई फोर्स है तो वो टेंशन है कि कंप्रेशन है? टेंशन है सर. टेंशन है सर. टेंशन. लेकिन अब ये जो चीज मैंने आपको बताई कि पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर उसके ऊपर एक फोर्स लगा करके प्लस है या माइनस देखोगे, प्लस है तो करेक्ट डायरेक्शन है. अब करेक्ट डायरेक्शन को फिर उल्टा करोगे, तब जाकर के टेंशन है कि कंप्रेशन है AB की पता लगेगी. ये बहुत लंबा चौड़ा मामला हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर. तो अब इसका एक सिंपल शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां पर मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ. यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट टू रिमेंबर द नेचर ऑफ फोर्सेस ऑन मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम. अब देखो, फ्री बॉडी डायग्राम को डायरेक्टली देखते हुए एक चुटकी में आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए ये पता कर सकते हो कि ये टेंसाइल फोर्स बनेगी इवेंचुअली या कंप्रेसिव फोर्स बनेगी. कैसे पता करना है? अगर जॉइंट से बाहर जाती हुई फोर्स फाइनल होती है आपकी, यानी ये फाइनल हो गया ना, ये प्लस साइन आ गया, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन फाइनल हो गया है. दिस डायरेक्शन इज फाइनल. अगर जॉइंट से बाहर जाती हुई फोर्स है तब तो टेंशन है, और अगर जॉइंट पे अंदर आती हुई फोर्स है तो वो कंप्रेशन है. बस इतना सा याद रख लो. अगर ये याद रखोगे तो आपको पहले एक्चुअल फोर्स, फिर उसको उल्टा करना, फिर देखना कि वो टेंशन है कि कंप्रेशन है, ये सारी हेडेक खत्म हो जाएगी. सो आई विल रिपीट वंस अगेन, कैसे पता करें कि FAB आपकी टेंशन है या कंप्रेशन है? सिर्फ इतना देख करके कि FAB जॉइंट से बाहर जा रहा है कि जॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये देख के बताओ. Look at this force and tell me whether it is going away from the joint or whether it is coming to the joint. Away from the joint. Away from the joint है तो, Yes sir. ठीक है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो वो टेंशन होगी. तो आंख बंद करके बोल दो कि ये टेंसाइल फोर्स है. अब इसमें आपको उल्टा करना, सीधा करना, खींच रहा है, दब रहा है, कुछ नहीं देखना, बस ये टेंशन ही होगी. 100% टेंशन है. और अगर कोई फोर्स जॉइंट के अंदर को आ रही है तब वो कंप्रेशन है. बस कहानी खत्म. दैट्स ऑल. चलो, नाउ कंटिन्यूइंग, अपने को FAB मिल गया, उसका नेचर पता लग गया, टेंसाइल है ये भी पता लग गया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज FAC. अब आपको FAC पता करना है. आपको FAB पता लग गया है, FAC कैसे पता लगेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 4 by root 3 here and now use equation number 1 and find the value of FAC. जल्दी से निकाल के बताओ कितना है? -2 by root 3 sir. 1.1545 kilonewton. ओके,
2/√3 या डेसिमल में जैसे भी आप निकालना चाहें अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। माइनस साइन आने का क्या मतलब है? FAC की वैल्यू निकल गई, वैल्यू तो करेक्ट है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? यू टेल मी दैट। कंप्रेशन। नहीं, पहले ये देखो कि आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उसमें FAC को ऐसे अज्यूम किया था, लेकिन डायरेक्शन FAC की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने FAC की डायरेक्शन ली है वो गलत थी और आपको अब इसकी डायरेक्शन को उल्टा लेना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। ओके सर। So what is the correct direction? Because it is coming as negative 2/√3, so that means the correct direction of FAC is reverse to the one that you assumed. बस ये है तरीका प्लस और माइनस को देख करके पता करने का। And now FAC की वैल्यू तो आपने डिक्लेयर कर दी, FAC don't put it as प्लस और माइनस, FAC की वैल्यू माइनस आई थी, लेकिन उस माइनस से आपने इस डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, करेक्शन कर लिया। Now FAC should be put as simply 2/√3। अब इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन साथ में ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये कंप्रेशन है कि टेंशन है? अब आपको जो शॉर्टकट मैंने सिखाई थी वो देखो, कंप्रेशन। कंप्रेशन है सर। the force is going towards the joint and that means you don't have to think much, simply put compression। समझ में आ गया कैसे किया है Yes, आपने? sir. तो अब आपने एक जॉइंट की एनालिसिस करके FAB निकाल ली, FAC निकाल ली। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 चीजें और निकालनी है, ठीक है? अब आपको ये पता लग गया है, देखो FAB पता लग गया है और ये पता लग गया है कि FAB का डायरेक्शन क्या है ये, ठीक है? अब आपको ये भी पता लग गया है कि FAC जो है वो कितना है और कैसे डायरेक्शन आ रही है, ये पता लग गया। अब आप ये बताओ, अब नेक्स्ट जॉइंट एनालिसिस के लिए कौन सा सेलेक्ट करोगे बाकी अननोन्स को पता करने के लिए? विच जॉइंट विल यू सेलेक्ट नेक्स्ट फॉर एनालिसिस? एक जॉइंट की एनालिसिस की, दो फोर्सेस पता लग गई, कौन सा जॉइंट लोगे नेक्स्ट आप? ई सर। ई पॉइंट। ई पॉइंट Yes, पे sir. आपके कितने अननोन है? कोई नॉन फोर्स है क्या, पहले ही बताओ। सिर्फ ये Non- पॉइंट ले लो। ई पॉइंट पे कोई नॉन फोर्स है ही नहीं, Yes, कुछ sir. भी नहीं पता ई के बारे में, तो इसलिए ई पॉइंट लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, यू विल गेट नथिंग। बी कौन सा फोर्स? यू विल टेक बी पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब आपको बी पॉइंट में एक अननोन तो ये है, एक अननोन ये है, क्या ये अननोन है क्या? ये तो मिल गया No, आपको, sir. FAB मिल गया, तो इसलिए अब बी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि इसमें दो तो अननोन है, दिस इज अननोन, दिस इज अननोन, बट दिस इज नोन, ये पता है। तो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी। अब बी पॉइंट लिया आपने और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहली फोर्स तो अज्यूम करो, देखो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं वापस से हवा में तीर लगा रहा हूं। सो आई विल पुट इट एज FBD। ये बी और डी को कनेक्ट कर रहा है ना ये रॉड, तो अब मैं इसका नाम दे देता हूं FBD। और ये डायरेक्शन मैंने ऐसे ही ले लिया है, ये बाद में जैसा आपने अभी देखा था ऑटो करेक्शन हो जाता है इसका। एंड देयर इज अनदर फोर्स, इसको क्या नाम दूं मैं? बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम है ये, FBC। FBC। और एक फोर्स है ये वाली। अब मेरे को इसका करेक्ट डायरेक्शन बताओ। देखो इसका डायरेक्शन आपको पता लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है? सोच करके बताना, मैं इसका एरो नीचे को लगाऊं या ऊपर को लगाऊं? थिंक एंड टेल, यहां से देख करके मत बोलना, गलत हो जाएगा। FAB टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है? टेंसाइल है सर। FAB में टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या होता है कि ये रॉड खिंची हुई है, कंप्रेशन का मतलब है रॉड दबी हुई है। तो अब मेरे को ये बताओ, एक खिंची हुई रॉड बी पॉइंट से कनेक्टेड है,
तो खिंची हुई रॉड जो है वो बी पॉइंट को कैसा एक्सपीरियंस देगी, बी पॉइंट को नीचे को खींचेगी या बी पॉइंट को ऊपर धक्का देगी, सोच के बताओ। खींचेगी सर। खींचेगी नीचे को। सो आई एम ड्रॉइंग दिस डायरेक्शन, ये बताओ ये करेक्ट डायरेक्शन है कि गलत डायरेक्शन है? करेक्ट सर। बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए बी। लेकिन अब मैं इसको एफ ए बी नहीं लिखूंगा क्योंकि अब ये अननोन नहीं है। एफ ए बी की वैल्यू कितनी है? 4/√3। 2.09 किलोमीटर। ये रहा ना, एफ ए बी इज 4/√3। यस सर। तो इस तरह से अब जो नोन फोर्सेस है उसकी करेक्ट डायरेक्शन लगाओ एंड अगेन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वर्टिकल वाई एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। ये टोटल 60 डिग्री था, सो दिस मस्ट बी 30 एंड दिस मस्ट बी 30। अब ये वापस से पूरा खेल वहीं पर आ गया जो आपने जॉइंट ए के लिए किया था। ये कितना एंगल है? दिस इज 60। नाउ कैन यू डू दिस एनालिसिस ऑन योर ओन? दो अननोन फोर्सेस, एक नोन फोर्स। इसको वापस से वही सेम स्ट्रेटजी, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी केप्ट इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आएगी विथ प्रॉपर साइन। देखो 4/√3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को बनेगा तो ये नेगेटिव लेना है। एफ बी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड को बनेगा तो ये पॉजिटिव लेना है। एफ बी डी प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो ये पॉजिटिव सीधे सीधे रख दो। तो इससे एक इक्वेशन बनेगी। देन समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल टू 0, इसको अप्लाई करोगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इवेंचुअली एफ बी डी और एफ बी सी आपको इन दोनों से मिल जाएगा जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था। एंड आफ्टर यू सॉल्व फॉर पॉइंट बी और जॉइंट बी, टू मोर फोर्सेस बिकम नोन टू यू। अब ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई। अब इसके बाद कौन सा जॉइंट लोगे? देखो पहले ही देख लो, ये पता है, ये भी पता है। कौन सा जॉइंट लोगे नेक्स्ट? अब आप बताओ। डी। yes, you can take point D or even point C। point C ले सकता हूँ? जरा सोच के बताओ। यस सर। यस सर ले सकते हैं कि भाई वीसी नॉन हो जाएगी। yes, यस सर। क्योंकि आपको एफ बी सी पता है और एफ ए सी पहले से ही पता है। तो आपके जॉइंट पे टोटल फोर्सेस कितनी है? 1 2 3 4। लेकिन इन चार में से दो तो नोन है और कंडीशन क्या है? कम से कम एक नोन होनी चाहिए। आपको ऑलरेडी दो नोन है और ज्यादा से ज्यादा दो अननोन होनी चाहिए और दो ही अननोन है। तो आप चाहो तो अपनी एनालिसिस पॉइंट डी पे कर सकते हो या अगर आप चाहो तो पॉइंट सी पे कर सकते हो। सो इट इज योर चॉइस। सो यू हैव टू मूव वन जॉइंट एट अ टाइम एंड मेकिंग श्योर दैट एट अ टाइम at whichever joint you land, you have to make sure that there is at least one known force। यानी कम से कम एक नोन फोर्स होनी चाहिए। एक से ज्यादा नोन है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि पॉइंट सी के केस में। पॉइंट सी के केस में दो नोन है और दो अननोन है। और किसी भी जॉइंट का जब एनालिसिस करोगे तो उस जॉइंट पे दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बाय मूविंग फ्रॉम वन जॉइंट टू द सेकेंड टू द थर्ड टू द फोर्थ, इवेंचुअली आपको सारे जॉइंट्स पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। देखो दो जॉइंट पे गए और चार फोर्सेस मिल गई, तो आपको क्या लगता है क्या सारे जॉइंट्स पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। आप पॉइंट सी पे चले जाओ, ये दोनों भी मिल जाएंगी। अब कितनी अननोन रह गई? सिर्फ दो अननोन रह गई। अब बस सिर्फ एक पॉइंट डी पे और चले जाओगे तो सारी फोर्सेस नोन हो जाएगी आपको। तो यू सिंपली हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए to joint B, then to joint C or D, whichever you choose, and then to joint D or joint C। यानी कि A B C D का प्रोग्रेशन अगर आप लॉजिकली फॉलो करोगे, you will come to get all the forces in all the members। ये पूरा तरीका, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्या? यस सर हो गई। So we will stop the lecture today, and now there is additional प्रॉब्लम इन द शीट। ये वाली प्रॉब्लम तो पूरी सॉल्व कर रखी है तो इस शीट से आपको पता लग ही जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व नहीं कर रखी है
लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इसको आप अपने आप करने की कोशिश करो. सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे. प्रॉब्लम नंबर 3 इज अगेन अनसॉल्व्ड एंड द सॉल्यूशन इज गिवन. ठीक है. इन सबको Yes, मेथड sir. ऑफ जॉइंट से आप आज ही सॉल्व करें, और अगर आपके ये करेक्ट आंसर्स आ गए तो आप 100% यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि मेथड ऑफ जॉइंट्स ऑफ ट्रस एनालिसिस से लेकर के जो आपकी आरटीयू की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है. तो बेटे ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एवरी सिंगल डे. हर दिन आपको पढ़ाई करनी है. अगर आप अपनी पढ़ाई को टालते रहेंगे, खासकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो आप फंस जाओगे. एंड मोमेंट में जाके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसीलिए एटलीस्ट जो मैं शीट्स आपको दे रहा हूँ, जैसे ये लेक्चर 7 की जो शीट आज मैं शेयर करूंगा, आप किताब से कुछ करो चाहे नहीं करो, लेकिन कम से कम ये जो 2 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इस शीट में दी है, इसके ऊपर पूरा मेहनत करो. ठीक है. एंड ट्राई टू सॉल्व इट. यू सॉल्व इट टुडे एंड देन यू कैन कंसीडर योर मेथड ऑफ जॉइंट्स टू बी फिनिश्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स डायरेक्टली. ठीक है. Okay, sir. ओके, प्लीज डोंट क्विट. मैं एक बार अटेंडेंस कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद जब मैं कहूं तो ही क्विट करें आप. Okay, sir. Okay, I've collected the attendance. Download. Check. Okay, now you can quit. Thank you, sir. sir. Thank you and have a good day. Good day, sir. Good day. अरे कूलर वो है. हाँ बोल. अभी